everybody, welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. Recently, I've started a video series relating to most important questions for IBPS SO Law Officer examination. The prelims result is out, and definitely for the mains preparation, these set of questions will be of great help for you. If you have any queries, you can reach out to us by writing us an email on hello@iexamb.com. You can also visit our website www.iexamb.com. Check out all the courses that are available. Even the course for IBPS law is available at iExamB ऑनलाइन कोर्स. आप बाकी के डिटेल्स के साथ ही चेक कर सकते हैं एंड अगर आपको कोई क्वेरीज आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 9205524028. Embrace the iExamB learning experience with us and don't forget to subscribe. So the IBPS SO Law Officer examination, I'm going to deal with you in each video different subjects. Last video I have dealt with you most important questions from constitutional law. अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिए then definitely you check it out in the playlist of Legal B. Legal B को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए and check it out. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम Arbitration Conciliation Act along with Transfer of Property Act. I'm going to discuss both the topics today in this one particular video. क्वेश्चंस डिस्कस करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? दिस विल हेल्प यू बिकम एग्जाम सेंट्रिक राइट नाउ. अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते रहे. मच टाइम इज नॉट लेफ्ट फॉर द मेंस. Those who have qualified need to be very much specific, very much focused on important areas, and you have to strategize your preparation. That is very important. उसके लिए अगर आप questions check out करते हैं, practice करते हैं, that will definitely help you out to phase your preparation in the right direction. So definitely check this out. कोई भी queries है so you can reach out to us by writing us an email on iExamB and call us जैसे मैंने अभी आपको बताया, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डायरेक्टली लिख सकते हैं. First question from arbitration: what is ADR? ADR is very basic of Arbitration Conciliation Act. It is very simple question but the concept is very important. इसके फुल फॉर्म पूछा गया है आपको तो इसके बारे में तो सबको पता ही होगा. दैट इज alternate dispute resolution. अगर उसमें एक छोटा s added है that will become ADRS, alternate dispute resolution system. So this is talking about all the processes and techniques that will help you resolve your disputes alternatively out of court. Which of the following is not true regarding receipt of written communications made under arbitration? Any written communication is deemed to have been received personally if sent on mailing address. The communication is deemed to have been received on the same day as it is delivered. Communication deemed to have been received if sent by judicial authority. Both B and C, none of the above. So अगर हम written communication की बात करते हैं तो written communication के बारे में उन्होंने क्या पूछा है, please focus on that. They have asked you what is not true. ये भी एक चीज़ है जो आपके लिए बहुत important है. सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं, आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. दे हैव आस्क्ड यू व्हाट इज़ नॉट ट्रू, देन यू हैव टू पिक द रॉन्ग आंसर फ्रॉम दिस एंड दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू. सो दिस ऑप्शन दैट इज सेंट बाय जुडिशियल अथॉरिटी, दैट इज नॉट अ रिटन कम्युनिकेशन विच विल बी कवर्ड एज आर्बिट्रेशन अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट रिसिप्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस. तो उसमें सारे क्लॉजेज में ये बाकी के ऑप्शंस कवर्ड हैं. एंड इज मेंशन दैट इट इज़ नॉट deemed to be received if it is sent by judicial authority. Arbitral tribunal shall include sole arbitrator, minimum 3 arbitrators, minimum 2 arbitrators, any number of arbitrators, both A and D. Arbitral tribunal include क्या कर सकता है? So which is the correct option? Tribunal is the word that is going to be used even for sole arbitrators, remember that. But सिर्फ sole तो correct option नहीं हो सकता. So this is option E, that is arbitral tribunal means a sole as well as a panel of arbitrators both can be called as arbitral tribunal, and this definition is covered under section 2D of the Act, Arbitration and Conciliation Act. International commercial arbitration is defined under part 1, 2, 3, 4, none of the above. इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कवर्ड है या नहीं आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में, एंड अगर वो कवर्ड है तो कहाँ पे कवर्ड है, दैट शुड बी नोन बाय यू. सो इट इज़ कवर्ड अंडर द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट एंड इट इज़ डिफाइंड एज वेल. इट इज़ कवर्ड अंडर पार्ट 1 इन सेक्शन 2. वी हैव द डेफिनेशन गिवन.
सेक्शन 2 क्लॉज एफ, एंड इस डेफिनेशन के हिसाब से वन ऑफ द पार्टी शुड बी from a foreign country. It can be an individual, it can be a company as well, association, whatever it is, should be based in outside India. As per part 1 of Arbitration Conciliation Act, judicial intervention is permissible in case of arbitration, not permissible in case of arbitration, not preferable in case of arbitration, permissible only if expressly provided under part 1, any of the above depending on facts and circumstances of the case. सो पार्ट 1 के हिसाब से जुडिशियल इंटरवेंशन कब किया जा सकता है, इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक प्रोविजन है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में. आई होप वो आपको अभी तक क्लिक हो गया होगा विच प्रोविजन आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है. यहाँ से हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब कोर्ट इंटरवीन कर सकता है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के केसेस में. Section 5 talks about it, the extent of judicial intervention. It is permissible only if expressly provided under part 1. So this is directly picked from the section. Option D is correct. Arbitration agreement means intention of the parties to carry out settlement, agreement by parties to submit to arbitration, reference of disputes by court along with parties to arbitration, A and B, all of the above. So what is the meaning of arbitration agreement? Section 7 covers arbitration agreement and it is very simple. ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल था, लेकिन arbitration agreement बहुत important topic है आपके लिए, क्रक्स है arbitration and conciliation act का. Without the existence of arbitration agreement, we cannot have the procedure of arbitration. ये हमें क्लियर होना चाहिए. सेक्शन 7 आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करना होगा. Can be in respect of a defined legal relationship, whether it is contractual or not, that does not matter. Party to arbitration proceeding may apply to the court for appointment of guardian for minor for arbitral proceedings. That can be done at any stage of arbitral proceedings, before the enforcement of arbitral award, during the arbitral proceedings, after making of the award, A and B, all of the above. So arbitration proceedings में अगर हम appointment of guardian for minor के लिए application करते हैं तो वो एक interim measure होगा. So when that interim measure can be taken, correct answer is all of the above. ये सारे स्टेजेस उसमें कवर होते हैं. इंटरम मेजर्स बाय कोर्ट, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 9. पार्टी में बिफोर और ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स और एट एनी टाइम आफ्टर द मेकिंग ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड ऑल्सो. किसी को ये ऑप्शन गलत लग सकता है तो वो A एंड B मार्क कर सकते हैं. रिमेंबर कि मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के बाद भी हम लोग इंटरम मेजर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट द ओनली कंडीशन इज दैट बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड. Parties are free to determine number of arbitrators provided that it is not an even number. This is provided under which section? Directly section based question है ये, बट यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली सेक्शन अगर पूछा जाए तो एक आधी बार पूछ भी सकते हैं. सिंपल सेक्शन है एंड यू कैन स्कोर वेल ओवर हियर. सो पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन दिस पार्ट ऑल्सो. यू कैन रिमेंबर इफ दे आस्क यू द अदर वे अराउंड, दे गिव यू द सेक्शन नंबर एज वेल and they ask you that who determines the number of arbitrators. So ये आपको याद रखना है that parties are free to determine that as per section 10. कोई भी लिमिट नहीं होती है. ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकता है. यहाँ पे 3 क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं. सिर्फ इतनी लिमिट है कि इवन नंबर नहीं होना चाहिए, so that the majority decision can be taken. Which of the following is a valid ground for challenge to the appointment of an arbitrator? No signature should be there on the award. His impartiality does not possess necessary qualifications, B and C, all of the above. इसमें से वैलिड ग्राउंड क्या है जब हम अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को चैलेंज करते हैं? ग्राउंड्स फॉर चैलेंज का एक सेपरेट सेक्शन है हमारे पास. अकॉर्डिंग टू दैट these are the grounds for the challenge. Arbitrator may be challenged only if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to his independence or impartiality, or he does not possess the qualifications that are agreed to by the parties. So ये grounds for challenge, ये भी एक important area है आपके लिए. तो यहाँ पे correct option है D, his impartiality and does not possess necessary qualifications. पहले यहाँ पे मैंने C लिख दिया है, there is a technical error, but the correct option is B and C, that is option D. ये section 12 clause 3 के हिसाब से. Power to rule on the jurisdiction of arbitral tribunal rests with whom? Arbitral tribunal, arbitrator in case of sole arbitrator,
Civil Court, High Court, Arbitration Agreement. Who will be ruling on the jurisdiction of Arbitral Tribunal? Arbitral Tribunal का jurisdiction क्या होगा, ये कौन determine करेगा? Who will decide if there is a dispute between the parties? So the ultimate decision is going to be of the Arbitral Tribunal only. This is also provided specifically in section 16 of the Act. Competence of Arbitral Tribunal to rule on its own jurisdiction. Commencement of an arbitral proceeding shall be marked when. ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं. सेम आप कंसिलिएशन के लिए भी कीजिए. When an arbitral proceeding will commence. When a conciliation proceeding will commence. So for arbitration, when does it commence? These are the options. When the party initiates, when there is formation of arbitration agreement, तब से ही हो जाता है क्या, या फिर जब रिक्वेस्ट किया जाता है to submit to arbitration. Which is the correct answer? So the correct answer is D. Request to submit to arbitration is received by the respondent party. This also we have specifically mentioned in section 21 of the Act. When that received, then when that request for arbitration is initiated, तब नहीं. जब एक पार्टी arbitration initiate करता है and the other party accepts that invitation or accepts that, receives that request, respondent party जो है, उस समय arbitration proceeding commence होती है. What is the role of a conciliator? Conciliator shall assist the parties in reaching successful stage of compromise, shall form a channel between the parties, shall assist the parties to reach an amicable settlement of their dispute. The conciliator shall resolve the dispute of the parties. Conciliator shall anticipate the possibility of settlement and send the parties for settlement in the court. यानी कि conciliator का actually role क्या होता है, that has been asked over here. अगर आपको कंसिलिएशन का प्रोसेस समझ में आया है, रूल के लिए हमारे पास स्पेसिफिक सेक्शन भी है. दैट इज सेक्शन 67 इज टॉकिंग अबाउट इट. करेक्ट ऑप्शन इज सी. कंसिलिएटर शैल असिस्ट द पार्टीज टू इन एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल मैनर. ये भी इंपॉर्टेंट है. इन देयर अटेम्प्ट टू रीच एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. कंसिलिएटर ड्रॉज. व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंसिलिएशन? जैसे आर्बिट्रेशन का एंड रिजल्ट है आर्बिट्रल अवार्ड. व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंसिलिएशन? इफ यू नो दैट यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. नहीं तो फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेटलमेंट अग्रीमेंट. Conciliator draws a settlement agreement. Section 73 talks about it. An important part also this is. Who signs on the settlement agreement? ये भी एक important part है. जैसे आर्बिट्रल अवार्ड पे आर्बिट्रेटर साइन करता है, इट इज़ अ डिसीजन. सेटलमेंट अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट है. सो दैट इज गोइंग टू बी साइंड बाय द पार्टीज. यहाँ पे ऑप्शंस बहुत अच्छे बनाए हुए हैं. यू मे थिंक, यू मे गेट कंफ्यूज, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर काफ़ी क्लियर हो जाएगा. नहीं तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे. सेटलमेंट अग्रीमेंट इज साइंड बाय द पार्टीज. Yes, it will definitely be authenticated by the conciliator. बट सिग्नेचर उसमें पार्टीज का क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये टर्म्स एंड सेटलमेंट, टर्म्स और प्रपोजल ऑफ सेटलमेंट जो कंसिलिएटर ने बनाया है, ये उनको एक्सेप्टेड है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आर्बिट्रल अवार्ड में पार्टीज साइन नहीं करती. Which section of Transfer of Property Act deals with sale of movable and immovable property? Now we are going to Transfer of Property Act. ये एक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे, बट सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, सो वी शुड नो अबाउट इट. मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल पूछा है उन्होंने यहाँ पे. सो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज़ नॉट ओनली डीलिंग विद इमूवेबल. काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है इट इज़ डीलिंग ओनली विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट ऐसा नहीं है. इट इज़ डीलिंग विद मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस. Chapter 3 provides for sale of immovable property only. Section 54 talks about it. बट वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है. तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम सेल की बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सेल सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है. बट अगर हम ओवरऑल देखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी कवर्ड है. फॉर एग्जांपल गिफ्ट इज टेकिंग प्लेस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल होता है, लीज होता है, सो ऑन. ट्रांजैक्शन फॉर ओनरशिप, for transfer of ownership in the property,
for a price partly paid and partly promised is, यानी कि आपने partly payment किया है, partly promise किया है that you will pay it, then that transaction of transfer of ownership is what? Whether it is sale, whether it is exchange, whether it is both, whether it is either, or it is mortgage of money. The options are very interesting. The question is simple if your concept is clear. Always transfer of ownership is going to talk about sale, and that too in exchange for price. सेल के डेफिनेशन में आप देखोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा प्राइस पेड, पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड भी वहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है. Mortgage is transfer of interest in an immovable property, securing payment of money, performance of pecuniary engagement, A and B together, A, B and C. A and B और C है वो actually. The correct option is very simple, it is E. ये सारे के सारे mortgage के ingredients हैं, तो ये सब कुछ उसमें आ जाएगा. Section 58 talks about mortgage. Mortgage बहुत बहुत ज़्यादा important provision है आपके लिए. इसमें से कई सारे questions form हो सकते हैं. मैंने तो यहाँ पे positive time की वजह से एक ही discuss किया है या दो ही discuss किए होंगे. But then I am trying to give you a guideline कि ये areas आपके लिए बहुत important है. When mortgage property is leased and it is renewed, now like this combination questions can also be asked. Mortgager does not get benefit of lease. Mortgagee gets the benefit of lease only. Mortgager gets benefit of lease or redemption of property. Lease gets terminated on redemption. Property which is mortgage cannot be leased. So अगर हम mortgage property को lease करते हैं तो क्या वो renew होने के बाद उसका क्या result होगा? These are the options. Correct answer is mortgager gets benefit of lease on the redemption of property. जब redemption हो जाता है तब mortgager को lease का benefit मिलता है. And this is covered under section 64 of TP Act. You can check it out in the TP Act. Renewal of mortgaged lease. And this is also subjected to absence of contract to the contrary. Remember that. Which of the following transfers of interest transfers only right to enjoy in the property? ये सब TP Act में covered है. Right to enjoy कौन सा particular transaction है? ये देखकर ही आपको समझ में आना चाहिए. ऑप्शंस भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. That is of course nothing but lease. Section 105 talks about lease. Lease के सारे ingredients आपको पता होने चाहिए. What is it? लेकिन mortgage we are transferring interest for securing payment of money. Here we are transferring the right to enjoy the property only. This is what is the specific characteristic of lease, and what we get in return: money, share of crops, all these things. Implied हो सकता है, perpetual lease भी हो सकता है. All these things are going to give rise to n number of questions. Last question for today. The day on which lease commences is included, excluded, depends on terms and conditions of contract, depends on rules made by the state government in the behalf, depends on the category of lease. तो यानी कि जिस दिन लीज कमेंस होती है उस डे को हमको टाइम लिमिटेशन में कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर करना है या नहीं करना. वी ऑल नीड टू हैव लिमिटेशंस. वी ऑल नो अबाउट लिमिटेशन एक्ट. तो जब हम टाइम कंप्यूट करते हैं, आर वी गोइंग टू कैलकुलेट द डे ऑन विच द लीज कमेंसेस, दैट इज द स्टार्ट. सो दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द लीज. इट इज़ गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड. स्पेसिफिक प्रोविजन है हमारे पास इसके लिए भी, सेक्शन 110 ऑफ TP Act. एक्सक्लूजन ऑफ द डे ऑन विच टर्म कमेंसेस. Whenever that is being computed, that particular day on which the lease commences is going to be excluded. So that was all that I had to discuss from these two topics for IBPS SOL Officer Exam 2024. I hope your preparations are going well. All the very best. Do reach out to us if anything is needed. Prepare 50% faster with us at iExam.